Well, the big story that we are tracking at this hour, the Supreme Court has ruled that a High Court Chief Justice cannot individually reconsider a recommendation for a judge's elevation, and that this is something that can only be done by the High Court Collegium acting collectively. Supreme Court has said that the High Court cannot decide on the names without consultation. In fact, the Supreme Court also added that the Collegium appointments, it is open to judicial scrutiny. And my colleague Sunil Prabhu joins us to get us more details on this. Sunil, it's a landmark order on the Collegium by the Supreme Court. The court has made an important observation about ensuring fairness and accountability. What are the important takeaways from this? Well, this is a first, and what has been basically done is a very, very categorical statement from the Supreme Court through a judicial order, where they have made it clear that the Chief Justice of a High Court is not cannot decide it arbitrarily on his own. It has to be in consultation with the two senior-most members of the High Court, whichever the case may be, and only then can they decide to reject this case. This is, of course, pertaining to Himachal Pradesh, but basically sets the ground that the Chief Justice does not take a decision on his own, but has to take a decision with the collegial, and in this case, at least two senior-most judges before deciding of whether to accept a judicial officer or to reject a judicial officer. Right, Sunil Prabhu, thank you very much for getting us all the latest there. Moving on to our other story that we are tracking, a major tragedy has struck Hathras. A bus has hit a van in Hathras and 12 people were killed, including 4 children. A bus and a van, it collided in Hathras and 12 people have died. This accident took place on the Agra-Aligarh National Highway. The police say that the bus was trying to overtake the van. इसमें ये एक्सीडेंट मीती में हुआ है। ये यहाँ पे सासनी हाथरस से खंदौली आगरा जा रहे थे, दावत खा के जा रहे थे। छोटा टाटा मैजिक में जो सवार थे, इसमें तत्काल ही घायलों की तरफ से अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है एवं जो ड्राइवर की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। क्या अभी इसमें कोई किसी में ड्राइवर की भी मौत हुई है क्या? नहीं, अभी इसको सुनिश्चित नहीं करा जा रहा है। अभी शिनाख्त करी जा रही है, सबको पहचाना जा रहा है और जो भी इसमें दोषी बचेगा। इसमें कितने बच्चों की कैजुअलिटी हुई है? देखिए, अभी तक 4 बच्चों की कैजुअलिटी बताई गई। And Union Home Minister Amit Shah, he launched the BJP's manifesto or the Sankalp Patra in Jammu and Kashmir. The BJP releases the manifesto for the upcoming Jammu and Kashmir polls. Amit Shah, he said that the BJP will eradicate terrorism and separatism in Jammu and Kashmir. He also promised laptops for higher secondary students in remote areas. In fact, another promise that was made is that the BJP will introduce metro services in Jammu and as well as Srinagar. Speaking on the Article 370, Amit Shah said that the Article 370 will never be restored. And the first phase of polling in Jammu and Kashmir is set to happen on 18th of September. 10 साल जम्मू कश्मीर के मूल बासिंदों की संस्कृति को ताकत देने वाले ये 10 साल रहे हैं। एक जमाने में धारा 370 की परछाई में यहां पर अलगाववादियों की मांगे, हुर्रियत जैसे संगठन और हुर्रियत जैसे संगठनों के नतमस्तक होती हुई सरकारें हमने देखी थी। ये 10 साल के अंदर आज धारा 370 और 35A पास्ट बन गया है। वो हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। इसका पूरे भारत और जम्मू कश्मीर की जनता को आनंद है। There is a tug of war going on over tickets in Haryana Congress. The central leadership's CEC meeting, it will be held again at 5 p.m. There is a problem on more than 24 seats is what we understand. A subcommittee meeting will also be taking place, and brainstorming has been going on for the last several days. The Congress High Command is also cautious about the rebellion that has happened after the release of BJP's first list.
And Congress as well as the BJP are facing internal dissent and alliance trouble before the crucial assembly elections in Haryana. The BJP, it has in fact extended an olive branch to the key loyalists who had quit the party after they were denied tickets. Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini, he in fact went to the former minister Karandev Kamboj. The former Haryana minister, he in fact had quit the BJP posts over ticket distribution. Remember, the Bharatiya Janata Party, it is also facing a wave of rebellion in Haryana after it changed off 40 of the 67 candidates in its first list for the upcoming state assembly elections. On the other hand, the Congress and Aam Aadmi Party alliance talks, it is now on hold. The Aam Aadmi Party, in fact, has demanded 10 seats, while Huda, he has refused to concede. We have seen since the list of candidates have been released by the BJP, we have seen a lot of people, they are raising red flag. Same situation is also observed in Panchkula, where we have seen Ranjita Mehta, who worked as a chairman of Haryana Child Commission in the BJP. She had also applied for the ticket, but ticket was denied by the party. Joining us, Ranjita Mehta, so we will talk to her. So ma'am, we have seen you are not able to get the ticket. What is your next course of action? What are you going to do? Like Gurpreet, my husband is not feeling well and he is being hospitalized from last 15 days. I'm not able to give him time. तो अभी तो उनको टाइम देने का जो है मेरा मन है कि मैं उनका देखभाल करूं. और आज काफ़ी पब्लिक जो थी, काफ़ी सपोर्टर्स जो थे, काफ़ी मेरे जो छोटे भाई हैं, बहनें हैं, वो मुझे मिलना चाहते थे और कहीं ना कहीं हॉस्पिटल का रुख कर रहे थे. तो उनसे मैंने गुजारिश की थी एक घर पे बैठ के बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सबके मन में रोष ज़रूर है कि पंचकुला से टिकट की दावेदारी हुई थी और 5 साल पहले जब लाया गया था मुझे बीजेपी में, तब ये वादा भी किया गया था कि अगला चुनाव जो है उसमें मुझे कंसीडर किया जाएगा. और इस बार कंसीडरेशन हुआ भी, पैनल में मेरा नाम था और जितने भी सर्विस में थे उसमें भी नाम मेरा टॉप पे था. पर कहीं ना कहीं जो न्यू ज्वाइनिंग्स हुई हैं पार्टी के अंदर और उसमें 78-79 प्लस के लोगों को भी लिया गया और उनको चुनाव लड़ाया गया, तो उस कंसिडरेशन में ज्ञानचंद गुप्ता जी को भी पार्टी ने एक बार फिर से मौका पार्टी पे अब ये कह रही है कि हमने प्रॉपर सर्वे कराया है और उसके बाद देखा है, क्योंकि लगातार 10 साल से राज कर रहे हैं हरियाणा में, अब एंटी इनकम्बेंसी है उसको भी कॉम्बैट करना. तो कहीं ना कहीं लगता है कि सर्वे में कोई प्रॉब्लम थी, जहाँ कोई और रीज़न था आपकी टिकट काटने का. देखिए, सर्वेज में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती. सर्वेज जो है जनता जनार्दन का एक ओपिनियन है जो निकल कर आता है और वो एक्चुअल ओपिनियन होता है. और मैं ये मानती हूँ कि जितने भी सर्वेज हो रहे थे, लोगों की डिमांड थी कि एक नया चेहरा, यंग चेहरा यहाँ से लाए गए. पर हम पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं. जब मैंने पार्टी को ज्वाइन किया था तो मोदी जी की रीति नीति को देखकर ज्वाइन किया था. जिस तरीके से बड़े उन्होंने बोल्ड डिसीजंस लिए थे, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उन्होंने नोटबंदी की थी, उन्होंने ट्रिपल तलाक पे बहुत बड़ा फैसला लिया था, उन्होंने धारा 370 को उठाया था. तो इन सब चीज़ों से प्रभावित होकर मेरी पार्टी में ज्वाइनिंग हुई थी. और मनोहर लाल खट्टर जी स्वयं मुझे लेने के लिए आए थे मेयर के चुनाव से पहले. उससे पहले 2019 की लोकसभा जो विधानसभा की चुनाव था यहाँ पे, तो मेरी टिकट होने के बाद कटी थी. इतना हो चुका था कि बैंक अकाउंट तक खुल गया था, सारे डिपार्टमेंट से एनओसी भी आ चुकी थी. पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने मेरी जो मेहनत थी उसको नहीं देखते हुए मेरी टिकट को डिनाई करके जो है मेरी टिकट काट कर पहले एमएलए की काटी, फिर मेयर की काटी, किसी और प्रत्याशी को लड़ाया गया. उसके बाद बीजेपी में ज्वाइनिंग के बाद मुझे पूरा मान सम्मान दिया गया, मुझे प्रवक्ता भी बनाया गया, मुझे चेयरमैन भी बनाया गया और अब चुनाव लड़ने की बारी थी. The Congress released its first list of candidates for the upcoming Haryana polls. The Congress has released the list of 31 candidates. In fact, Bhupinder Huda, he is set to contest from Gadi Sampla, while wrestler Vinesh Pogart, who joined the Congress on Friday, she is set to contest from Julana. Pradeep Chaudhary, he will be fielded from Kalka. So the countdown to the Haryana polls is on. Haryana, remember, goes to polls on October 5th. Some of the important names that have been fielded from different cities, including that of Meva Singh, who will be fighting against the Chief Minister, the current Chief Minister, Nayab Singh Saini from Ladwa. Ram Karan, he has been fielded from Shahabad. Another important name, Vinesh Pogart, she has been fielded from Julana, while Jagbir Singh Malik, he has been given a ticket from Gohana. So the Congress's first list of
for the upcoming Haryana polls is out. 31 candidates have been named in that first list, including the names of Bhupender Hooda and Vinesh Phogat. And my colleague Sunil Prabhu joins us to get us more. Sunil, the first list for the Congress is out. This has come out after much deliberation, it seems. That's right. They wanted it. It is expected. It was expected in the first week of September. Rahul Gandhi left for the United States of America yesterday. So today, of course, they wanted to have one last meeting and clear most of those seats. Most of them have, where there were single names, have been cleared. This is the first tranche, and for strategic reasons, they have released only 31 seats. The rest will, of course, be announced shortly, probably tomorrow or day after. Also, the pending seat sharing, if it is going to happen between the Aam Aadmi Party and the Congress, and how many seats, those are being worked out. So 31 seats, as you rightly pointed out, Mr. Bhupender Singh Hooda, the strongman and who's the strong contender to become the chief minister, is contesting, as well as the PCC chief, Meva Singh, to take on the present chief minister, as well as Lalu's son-in-law contesting from a Congress ticket. And it's in that backdrop, we'll have to wait and see how these 31, most of them are sitting MLAs, and they have, been able to keep their seats and their position. So it's more or less on expected lines. Nothing very, very surprising. As you pointed out, Phogat, who joined the Congress party this afternoon, has also been given a ticket to contest from Julana. All right, Sunil Prabhu, thank you very much for getting us all the latest from there. And in yet another escalation in Manipur, a long-range bomb suspected to be a rocket-propelled grenade, it hit Moirang in Manipur's Bishnupur district, which borders Churachandpur district, where an elderly man who was working for a ritual in nearby house hit by splinters from the bomb died on the spot. Police have said that 5 people have also been injured, and the locals, they allege that the bomb was fired from the hillside and the bomb hit the residence of the first Chief Minister of Manipur. Union Environment Minister Bhupender Yadav speaking exclusively to NDTV at the Sustainability Mission Conclave. He said that the Congress is indulging in politics of polarization while ignoring affirmative action on the Congress and opposition's demand for a caste census and how it could affect the upcoming assembly elections, including that of Maharashtra, Haryana and Jammu and Kashmir. Mr. Yadav said that all societies have some form of division, and if it is not caste, it could be class, religion or race. And the thing that matters is what is done about that. Listen in to that conversation. So some political questions, because you're handling the most important state of Maharashtra, and you've handled, I always say this, Bihar 2020, Gujarat 2017, Madhya Pradesh 2023, and Odisha 2024, which I think were the most difficult elections for the BJP. Ab Maharashtra 2024, which a lot of people have written off, saying that, क्योंकि sympathy factor है, Maratha factor है, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो challenges तो आप लेते रहते हैं सर, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है क्योंकि चुनाव में भी 240 seats आए हैं, caste has become so sort of like, it's become the buzzword now. So आपको क्या लगता है सर कि जो आने वाले चुनाव होंगे हरियाणा, जम्मू कश्मीर, जहाँ पे ऑलरेडी रिबेलियन हो रहा है बीजेपी, एंड महाराष्ट्र, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिस्टिक क्या आपको लगता है कि पार्टी की क्या स्थिति रहेगी? देखो, आपने 240 और कास्ट को जोड़ा है. ऐसा नहीं है कि सोसाइटी में कभी डिवीज़न होगा ही नहीं. कास्ट होगा, कास्ट नहीं होगा तो क्लास होगा, क्लास नहीं होगा तो रिलीजन होगा, रिलीजन नहीं होगा तो रेस होगा, रेस नहीं होगा तो एरिया होगा. क्या सब कुछ समाप्त हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा. क्वेश्चन ये है आपकी उसके प्रति दृष्टि क्या है. और जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑब्जेक्ट रखा था
वो ये था कि इस प्रकार के जब भी डिवीज़न होंगे तो स्टेट के पास ये राइट होगा कि वो अफर्मेटिव एक्शन बनाए। अब कास्ट को लेकर आजकल हमारे कांग्रेस के नेता बहुत तरह की बात करते हैं। मेरा एक प्रश्न है कांग्रेस से कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि जो सोशली और बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, स्टेट उनका अध्ययन करने के लिए एक कमेटी को बनाएगी और उसके आधार पर निर्णय करेगी। ये भी एक तरह का सेंसस ही था जो गणना की बात कर रहे हैं। तो संविधान बना तो उन्होंने एक बार काका कालेलकर कमीशन बना दिया। तो वो ये बताएं कि 1950 से लेकर के 1975 तक उनका एक छत्र राज था, तब उन्होंने ये क्यों नहीं किया? उसका कारण है 1950 से 1975 तक उन्होंने माइनॉरिटीज को गोलबंद किया। आप देखो कांग्रेस की जो राजनीति है वो माइनॉरिटी की राजनीति थी। अब उनको लगा कि ये गोलबंदी नहीं हो सकती, तो उन्होंने कहा कि नई तरह की गोलबंदी ढूंढ लो। Time for a very short break. More news and updates on the other side.